first topic for today is Palm 400. So what is Palm 400? So Indian Army has been testing armed drone variants, the aerial targeting system called Palm 400. कहाँ पे? पोखरान में. ठीक है? It is a remotely piloted vehicle built by A-Vision Systems. So it's kind of an UAV. It's a kind of a UAV, Palm 400. If somebody asks you in the exam, it's asked Palm 400, what is it? So it is a remotely piloted vehicle built by A-Vision Systems and by the Indian Army. Okay. Next, you have what is it about the chief? It is about the Chief Election Commissioner. It is about the Chief Election Commissioner. So as we know, the Election Commission, it is formed under Article 324 till 1990, 1988. It was a one-member body, and now it is a 1+2, three-member body with a Chief Election Commissioner and 2 election commissioners. So the 5-judge bench. So you must have heard about the debate about appointment, how we are to appoint the commissioners of the Election Commission. So the 5-judge bench of the Supreme Court, it has unanimously ruled that a high-power committee consisting of the Prime Minister, the Leader of Opposition, and Chief Justice of India. So, see, the office of the Election Commission is one of the very most important offices in our constitutional setup. So, what the judge has, the bench has recommended, the 5-judge bench, the committee to appoint should include the Prime Minister, the LOP, the Leader of Opposition, and the Chief Justice of India. But recently, you must have seen in the news, आपने न्यूज में देखा होगा, how the legislature, the parliament has introduced a bill which has replaced CJI with one of the ministers nominated by the Prime Minister. So it kind of questions the credibility of the committee, that it will be more of a one dominated by the party in power. So that needs to be taken account here. Okay. So judgment has brought the appointment process on bar with the CBI director. CBI director की appointment भी ऐसे होती है. उसमें one of the third member is the Chief Justice. The CEC, like the judges, it can be removed from the office only by way of parliamentary process. So, the Supreme Court के judges हैं, they are removed by a special majority of both houses of the parliament. Similarly, the election commissioner is also removed. Chief Election Commission, CEC, is also removed in that manner. All right, but such protection is not available. It's not available to EECs. So ECs, जो election commissioners हैं, उनको remove किया जाता है. If the president recommends, CEC recommends. If the CEC, the Chief Election Commissioner, he recommends to the president, then the election commissioners can be removed on the recommendation of Chief Election Commissioner. So the Election Commission Conditions of Service and Transaction of Business Act 1991, what it says, an amendment to the above act in 1993 made the CEC and ECs equal by giving all three the status of a Supreme Court judge. All right, that is retiring age of 65 years. So they will retire at 65 years of age, and most likely they will have 6 years of tenure, whichever is earlier. Means if 65 years is reached earlier, they will retire. They cannot serve beyond 65 years, and 6 years is the maximum tenure they can have. This means all election commissioners now have equal decision-making powers. See, these 2 election commissioners are not subordinate to the Chief Election Commissioner. They hold an independent constitutional office, but the CEC is kind of, he's been appointed as the first amongst the equals. The Honorable Supreme Court, in its 1977 judgment, had mentioned that the word superintendence, direction and control, as well as the conduct of all elections, are the broadest terms. So, ये constitution में define नहीं है. So this thing you have to just remember. They might ask in the polity question that
with the following terms, which of the following terms have been defined in the constitution? So these are not defined. They are left to the wisdom of the judiciary as well as to the parliament. Moving on, we have India-Italy relations. Okay? India and Italy have elevated their bilateral relation to the level of strategic partnership. Okay, so they have elevated their bilateral relationship to the level of strategic partnership. All right, establishment of a startup bridge between India and Italy. India-Italy strategic partnership on energy transition, not all that important. Then just remember this year-long festival of India in Italy, Citizen Festival. So Citizen Festival is being celebrated in Italy as the India Festival. Okay. Ornamental fish culture has been introduced in Lakshadweep. It's kind of a through self-help groups. It has been introduced to help women augment, increase their subsidiary income. उनको अपनी income को increase करने के लिए कुछ opportunities दी गई यहाँ पे. Lakshadweep Islands are introducing community-based ornamental fish culture क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा एक्वाकल्चर का स्कोप है, फिशरीज का स्कोप है, तो वुमेन को एम्पावर करना है यूजिंग लोकल रिसोर्सेस. ओके, तो टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से मिलेगी इनको? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस. ओके, Nagaland gets its first woman MLA. So this could be asked because it's first such development. So Hikanji Jakhalu from the Dimapur constituency. Just remember the name. Hikani Jakhalu from Dimapur. So Dimapur is in Nagaland. Okay. 13th century temple. 13th century temple discovered at Pushpagiri Kshetram in Kadapa district. तो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट का आंध्र प्रदेश में, पुष्पगिरी एरिया भी आंध्र प्रदेश में. The hillock, also known as Pushpachala, is a famous chain of temples dedicated to the Hindu pantheon of gods. And river कौन सी है? River Penna. River Penna flows close by to Pushpagiri Kshetram. Pushpagiri is referred to as Hari Hara Kshetra. ठीक है? So it is dedicated. So this becomes important. So dedicated to which god? Shiva and Vishnu. Okay. And rulers, which are the rulers that build these temples? Kayast rulers. Kayast rulers in 13th century. So important points here. So this temple has been Pushpachala temple, found in Andhra Pradesh, river Penna के पास में, dedicated to both Lord Shiva and Vishnu by Kayast rulers in 13th century AD. All right. इनके अगर if it can be asked who were the main rulers and what was the capital, so Great Amba Deva was one of the main rulers, and they were subordinated to the Kakatiya. So Kakatiyas ruled in Warangal near Andhra Pradesh. They ruled in the region with Vallur. तो इनका कैपिटल क्या था? वल्लूर. तो ककातिया डायनेस्टी भी आंध्रा रीजन की है, और ये आपकी कायस डायनेस्टी भी आंध्र रीजन की है. इनका कायस का कैपिटल वल्लूर था, and Ambadev was one of their popular leaders. Okay. Again, शिशुपालगढ़ कहाँ पे है? शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है. ठीक है. It is believed to have been built around 7 to 6 century BC. Means अभी से 2700 years ago. And Shishupalgarh, it served as a capital of Kaling Kingdom. So it served as the capital of the Kaling Kingdom and was an important center of trade and commerce. ठीक है, ये चीज याद रखें. एक और चीज है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. तो इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम was quite unique. Water management system. The fortification was carried out in 4th to 5th century, 3rd century BC by King Kharvela. तो खारवेला किंगडम कलिंगा में था, ये याद रखना है. किंग खारवेला
Okay. What was the timeline? 4th to 3rd century BC. All right. बस यही मेन याद रखना है. शिशुपालगढ़ इनका कैपिटल था. इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वाज वंडरफुल. So these are the things you have to remember, the major points, the major pointers about these topics. Okay. Then there is an important topic, Porter Prize. ये factual trivia में it can be asked to you. What is Porter Prize? Union Health and Family Welfare Ministry received the Porter Prize. ठीक है? Who gives it? Institute of Competitiveness and Stanford University. किस लिए? For its wonderful management of COVID-19. ठीक है? किसके name पे named है? Michael E. Porter. He was an award-winning economist. So just remember, which of the Indian ministries have been awarded Porter Prize? Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है? कौन देता है? Competitiveness and Stanford University. So just remember this, for better COVID management. This is all you need to know here. Moving on. Great Panna Landscape Council. Abhi, you all must have known about the Ken-Betwa River Linkage Program. Ken-Betwa River Linking, one of the most ambitious river linking programs in the country. ठीक है? So let's understand a little bit about it. क्योंकि वो पन्ना वहाँ पे टाइगर रिजर्व है आपका, that will also be impacted. And कौन से region में है ये? बुंदेलखंड. It is in Bundelkhand region. Okay. So Ken-Betwa Link Project कहाँ पे है? Drought prone Bundelkhand region में. So it has been prepared for the conservation of wildlife and biodiversity in Panna Tiger Reserve and the surrounding areas. तो आपने देखा है कि ये जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, और ये केन बेटवा रिवर लिंकेज से लॉट ऑफ एरिया विल बी सबमर्ज्ड. It has been assumed that around 40% of this area will be submerged, and what it will do, it will damage ecosystem. Okay. It will lead to displacement of tribals in the region. Displacement of tribals. It will also lead to, habitat destruction for wild flora and fauna. Habitat destruction for wild flora and fauna. Okay. All right. So you have to understand a concept in entirety, why these projects are important. See, this project is important to address the water scarcity needs in the region. Okay. But at the same time, we have to ensure ecosystem stability as well. So that is being kind of challenged here. Okay. Then PDS, smart PDS. आपने सुना public distribution system. Public distribution system for provision of subsidized food grains to the teeming millions of India, the most underprivileged people. So now we have launched smart PDS. What it will do? It will use technology to reduce human intervention. ठीक है? तो जितना ज़्यादा technology use करेंगे, leakages कम होंगी. It will reduce the leakages and ensure a good last mile delivery. Last mile delivery. The people in the last section, they will get to enjoy these benefits. Nodal ministry कौन सी रहेगी इसकी? Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. So just remember these two things. Which will be the ministry that will be implementing? This one. Okay. This one. And what it will do? Use technology. Otherwise also you should know about, इसके साथ साथ you should know about the NFSA, National Food Security Act. उसके अंदर कितने परसेंट लोगों को, 67% लोगों को फूड ग्रेन्स मिलता है. प्लस अंत्योदय अन्न योजना. Plus, recently we had seen Pradhan Mantri
Garib Kalyan, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. So all these schemes have been launched to ensure food security to the vast majority of people who don't have the resources, who are marginalized. And just remember the ministry here. This is important. Okay. Next is Asia Energy Transition Initiative. Okay. Japan. Japan will support India's clean energy transition program by including India in the Asia Energy Transition Initiative. Remember this. Who launched this Asia Energy Transition Initiative? With the leadership of Japan. It will be supported by ASEAN countries. So ASEAN countries कौन सी? This is your homework. Tell me what are ASEAN countries, कौन सी countries ASEAN countries में आती हैं? You do that. ठीक है? इंडिया का टारगेट क्या है आपको पता ही है, नेट जीरो अचीव करना हमने, नेट जीरो बाय 2070. सो व्हाट इज नेट जीरो? आपने अपनी कार्बन एमिशंस को कार्बन न्यूट्रल बनाना है बाय व्हाट 2070, और 2030 तक हमारा टारगेट क्या है, इसको रिड्यूस करना है टू 50% एंड अकॉर्डिंगली विल कीप ऑन रिड्यूसिंग इट. सो दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2021. ठीक है, एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, एंड इसमें $10 बिलियन की फंडिंग होगी टू पावर renewable energy, because fossil fuels are dwindling fast as well and they are climatically not suitable. ठीक है, इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? IEEFA, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है. ठीक है, Aztec hummingbirds, Indian sunbirds, Aztecs and Incas. अगर आपको Aztec civilization कहाँ पे है? लैटिन अमेरिका में. Inca civilization, Incas. Aztecs and Incas, they are found in Latin America. ये Spanish people, when they invaded, when they conquered, when they colonized South American continents, यहाँ पे communities थी Aztecs and the Incas, तो उसके नाम पे Aztec hummingbirds. ठीक है, तो recent study ने क्या रिवील किया है? Loss of a gene, this one, FBP2 in hummingbirds has made them more efficient at breaking down sugar molecules. Not important. Aztecs क्या है? सेंट्रल मैक्सिको रीजन में, जैसे हमने बताया, वो जो नॉर्थ सदर्न अमेरिका के जो नदर्न पार्ट में है, these are found there. ठीक है, you don't need to remember too much about it. Just remember which area they belong to, and recently because of the disappearance of this gene, their ability to break down sugar, digest sugars, has increased, and that has kind of boosted up their metabolism and उनको जो उनकी hovering capability को बढ़ाया. Hovering means they just launch their flight. Okay. Next on, we have tea के बारे में पढ़ेंगे. What are the climatic requirements for the tea crop? कहाँ grow करता है tea? Hot and humid climate. And what is the temperature required? The temperature range required is 20 to 30 degrees. Okay. 150 to 300 centimeter of rainfall. ठीक है, ये मेन कंडीशन है जो आपको याद रखनी है. किसी को कुछ डाउट होगा तो बीच में यू कैन आस्क. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 to 30 degrees Celsius, that is the temperature range, and 150 to 300 centimeter rainfall चाहिए. ठीक है, that is important. Also it grows in slightly acidic soil. ये भी एक important fact आ गया. Hot and humid climate, this is a temperature range, and a slightly acidic soil is needed. ठीक है, और hill ranges में, slopes of hills में it grows. ठीक है, made from Camellia sinensis plant. ये plant का नाम याद रख लें, Camellia sinensis, and is the second most consumed drink. Okay, it is the second most consumed drink. ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ टी 21 मई को होता है. ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी. फर्स्ट कौन सी है? ऑब्वियसली चाइना.
चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। दार्जिलिंग टी को कहा जाता है शैंपेन ऑफ द टीज, इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, बिकॉज इट इज द रीजन ऑफ द्वार्स, गुड क्वालिटी टी इज प्रोड्यूस्ड है। नाउ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर कि टी बोर्ड का ऑफिस कहाँ पे है? तो टी बोर्ड का ऑफिस आपका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। सो ये बहुत सारी डिबेट चलती है इस सिलसिले में कि while Assam produces majority of tea, why is the headquarters in Kolkata? So Assamese people, the Assamese tea community has been protesting about it quite a time. So it comes under Ministry of Commerce. These are important facts to be remembered. एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है ये, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और 1953 में ये बनी थी। इसके दो फॉरेन ऑफिस भी हैं, कहाँ पे? दुबई एंड मॉस्को। तो ये this topic becomes very, very important. Just make short notes of it. We have holistically covered different areas, the requirements for growth of tea crop, which is the plant that, कौन सा प्लांट है जिससे प्रोड्यूस किया जाता है। इंटरनेशनल डे कब होता है? मई 21 को होता है। सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। दार्जिलिंग टी चैंपियन ऑफ द टी, स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, हेडक्वार्टर कोलकाता एंड दुबई एंड मॉस्को में दो ओवरसीज ऑफिसेज हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। Two main types of certifications. Number one, forest management. Second, chain of custody. तो इसमें आपको इतना नहीं घुसना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट नाम याद रख लें। एंड सी, इंडस्ट्री हैज बीन ऑपरेटिंग सिंस लास्ट 15 years. फॉरेस्ट इन ओनली वन स्टेट आर सर्टिफाइड। किस, कहाँ पे? यूपी में। तो 41 डिविजन ऑफ यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, जस्ट रिमेंबर दिस, ये फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन सिर्फ एक ही स्टेट में है, यूपी में। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन 2022 रिपोर्ट। हु रिलीज दिस रिपोर्ट? IEA. What is IEA? International Energy Agency. International Energy Agency. So global energy related CO2 emissions rose by 1%, ठीक है, 1% rise किया ये। Rise in emissions was smaller than the exceptional jump of 6%. तो पिछले साल 6% राइज हुआ, इस साल सिर्फ 1% राइज हुआ। There has been quite some improvement. So excluding China, emissions from Asia's emerging and developing countries increased by 4.2%. चाइना को छोड़ के, ज्यादा फिगर याद मत रखिए, बस ग्लोबल ये पिछले साल 1% राइज हुआ है। और ये रिपोर्ट कौन देता है ये याद रखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। सो इट्स द फर्स्ट इन द न्यू सीरीज ऑफ ग्लोबल एनर्जी स्टॉक टेक, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस रिपोर्ट, दैट्स इट। मूविंग ऑन, या COP28 हम पढ़ते ही रहे हैं, इसमें दुबई में हो रहा है, ठीक है। व्हाट आर सॉल्ट फ्लैट्स? व्हाट आर सॉल्ट फ्लैट्स? ये एक नेचुरल लैंडस्केप है in which a large area of flat land is covered by salt, ठीक है। So if we have, these marshy areas, for example run of Kutch वाला area हो गया, so you have a lot of salt आपका काफी ज्यादा वहां पे होगा, ठीक है, फ्लैट लैंड्स में। तो ये कहाँ पे अभी है? वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट फ्लैट कहाँ पे है? सलार डी उयूनी इन बोलिविया, ठीक है, ये याद रखें बस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलार डी उयूनी इन बोलिविया, ठीक है। इट कंटेन्स हाफ ऑफ द प्लैनेट्स लिथियम रिजर्व्स। हमने 2-3 दिन पहले जब लिथियम के बारे में पढ़ा था, हमने लिथियम ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ा था, ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, ठीक है, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। सो दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, और वर्ल्ड का हाफ यहाँ पे मिलेगा आपको। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स lithium reserves you will find in Salar de Uyuni, Bolivia. A salt flat forms from a natural water body whose recharge rate is lower than the evaporation rate, ठीक है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल सनलाइट आ रही है ना किसी लैंड ट्रैक पे, सनलाइट, सो इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है यहाँ पे, you will have more evaporation and less water is being replenished.
सो क्या होगा, ऊपर ये ड्राई लैंड, ड्राई एक पैन से बन जाएंगे, सॉल्ट पैन्स बन जाएंगे. सो दैट लीड्स टू दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट फ्लैट लैंड्स. तो ये होता है where the evaporation rate is comparatively higher than the rate of replenishment. Means जितना पानी मिल रहा है उससे ज्यादा evaporate हो रहा है. So salt pans बन जाएंगे. ओके, नेक्स्ट आप आ जाइए. ओल्ड पेंशन स्कीम की हम बात कर रहे हैं कि काफी बार, अब आपको एनपीएस के बारे में पता होगा, नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में इट वाज स्टार्टेड. तो उसके बाद जो आपका पेंशन बेनिफिट्स थोड़े से कम हो गए थे. Recently, some states have started the old pension scheme. So how it's going to happen? What are the provisions? So that will start. Just see the major differences. Old और new pension scheme के बीच में क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है. The amount fixed was based on the years of service and last pay drawn. ठीक है, ये old pension scheme में होता था. New pension scheme में क्या है? It was based on the contribution and the market performance of investment. एनपीएस में होता क्या है, आपका जो कॉर्पस है इट इज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज. एलआईसी में, एसबीआई में इन्वेस्ट किया जाता है. तो आपको जो कॉर्पस मिलेगा पेंशन फंड का वो डिपेंड करेगा मार्केट रिटर्न्स पे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल है, वो थोड़ा सा स्टेबल था. ठीक है. सेकेंडली, गवर्नमेंट बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ओल्ड पेंशन स्कीम में. ठीक है, इसमें क्या है आपको पता है, 12% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को देना रहता है. ठीक है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो पोर्टेबल नहीं थी. ठीक है, स्पेसिफिक एम्प्लॉयर. और ये जो आपकी न्यू पेंशन स्कीम है, यू कैन मेक इट, ट्रांजिशन इट अक्रॉस एम्प्लॉयमेंट्स, अक्रॉस जॉब्स. आप जॉब चेंज करेंगे लेकिन आपका जो प्रान नंबर होता है वो सेम रहेगा, सो दैट वो पोर्टेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स हो जाए. ठीक है. विड्रॉल लिमिट के ऑप्शंस थे, उसमें आप लमसम निकाल सकते थे, इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है. सो बेसिकली एनपीएस लाया भी क्यों गया था न्यू पेंशन स्कीम, टू रिड्यूस द to reduce the burden on the exchequer. Burden, क्योंकि see, now most of the people who are drawing pensions, they are being funded by the salaries of the youngsters. So it's kind the young funding the old. Somewhere it has to end. So that is what it was, a more pragmatic uh, decision, and it targeted at fiscal consolidation. Fiscal consolidation. Okay. So obviously it was a right step, but because of certain political commitments, in certain states, some states have sought to bring it back, the old pension scheme. Actually, it is not viable from the economic sense. That is what you have to understand. Okay. Next आ जाइए, what is the liberalized remittance scheme funds? तो अगस्त 2022 में आरबीआई ने डायरेक्ट किया कि any money remitted overseas by Indian residents that remains unlisted for more than 180 days needs to be repatriated back to India. ठीक है, अगर इंडियन सिटीजन है, हम बाहर, एक तो रेमिटेंस इंडिया में आती है, अगर बाहर अगर जाती है तो अगर उसको, ठीक है, अनयूटिलाइज रहेगी 180 दिन तक, तो उसको वापस इंडिया में आना पड़ेगा. तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है? इंडियन इंडिविजुअल्स कैन सेंड देयर मनी आउटसाइड अप टू $250,000 a year. ठीक है. नॉन परमिसिबल ट्रांजैक्शन, इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है? ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, अब फॉरेन में पैसा फॉरेन एक्सचेंज में नहीं लगा सकते, और लॉटरी टिकट्स भी नहीं खरीद सकते, तो ये रिस्ट्रिक्शन है. और एलआरएस इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड ट्रस्ट. तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को ये प्रोविजन अवेलेबल है. ठीक है, कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रीज, पार्टनरशिप फर्म्स, दे कैन नॉट अवेल ऑफ दीज बेनिफिट्स. आउटवर्ड रेमिटेंसेस क्या होता है? हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, आरबीआई में फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, वी गैदर आवर फॉरेक्स रिजर्व बाय kind of getting remittances from abroad. जो बाहर नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, they send money, they send money in India, they send money in India, which boosts, ठीक है, it kind of boosts our forex reserves. Okay, so that is about it. ये आपको बस थोड़ा सा समझना है. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स?
कोई डाउट है तो बोलिए। Am I audible to you? Yes, sir, no doubt. हाँ, और किसी को कोई डाउट? कुछ समझ आ गया सब? No doubt, sir. Okay, wonderful. So next is Samarth scheme. Okay. What is Samarth scheme? Scheme for capacity building in textile sector. कौन लॉन्च करेगा इसको? I think we'll make it a bit more interactive. आप लोग अपने mics on रखें. I'll be asking questions in between. थोड़ा सा interactive होने से थोड़ा सही रहेगा. तो टेक्सटाइल सेक्टर की स्कीम कौन लॉन्च करेगा? Go ahead. Ministry of Textiles, obviously, right? Yes, sir. Yeah, so in between I'll be asking questions, try to answer, try to get involved in the class. Okay, so Samarth scheme है capacity building in textile sector. ठीक है, कब तक रहेगी? मार्च 2024 तक ये implement रहेगी. Demand driven, placement oriented, umbrella skilling scheme, Ministry of Textile. ठीक है, so it is kind of build the skill set of people working in the uh, uh, textile sector and how it will ensure more productivity and all these things. ठीक है, entrepreneurship को भी boost करेगी ये. MSD, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship को भी collaborate करेगी. ठीक है, create jobs and provide skilling opportunities for the marginalized section. All right, fine. Office of the Development Commissioner Handicrafts is implementing this scheme under skill development in handicraft sector under NHD2, National Handicraft Development Program. तो इसमें क्लॉज क्या है कि 70% मैंडेटरी प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, 70% एंट्री लेवल पे और 90% फॉर द अपस्किलिंग प्रोग्राम. ओके, नाउ वी हैव अ स्पीशीज है, जर्डन्स नैरो माउथ फ्रॉग. ठीक है, तो ये क्या है? It is a mountain species. It's a frog species found in the mountains in the Western Ghats. ठीक है, इसका बस स्टेटस याद रख लीजिए. कहाँ मिलती है? एक तो वेस्टर्न घाट्स में. स्टेटस इज नियर थ्रेटेंड. ठीक है, नियर थ्रेटेंड है, लेकिन कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो कह रहे हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है, तो इसको एंडेंजर्ड में डालो. अभी ये नियर थ्रेटेंड में. ठीक है, सो दे वांट टू पुश इट फ्रॉम नियर थ्रेटेंड टू एंडेंजर्ड. ओके, मूविंग ऑन. Western Ghats is also known as the Great Escarpment of India. Just the nomenclature, remember it. What is known as the Great Escarpment of India? It is a UNESCO World Heritage Site, and it is one of the mega biodiversity regions in the world. Mega biodiverse regions of the world. It is a biodiversity hotspot as well. Biodiversity hotspot. Okay. Next आ रही है लोकायुक्ता. तो सेक्शन 63 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013. यू नो, अन्ना हजारे की कैंपेन के बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन लोकपाल बिल लाया गया था. इट मैंडेट्स दैट एवरी स्टेट shall establish a body known as लोकायुक्ता. ठीक है, अब कंपोजिशन क्या होगी इसकी? व्हाट विल बी द कंपोजिशन? द लोकपाल शुड कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स. ठीक है, 8 मेंबर्स होंगे मैक्सिमम. उनमें से 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे और एटलीस्ट 50% इन कैटेगरी से होंगे, SC ST OBC माइनॉरिटीज वुमेन. ठीक है, 50% जुडिशियल मेंबर्स and 50% from these sections. ठीक, अब पावर्स क्या है इनकी? What are the powers? They can investigate complaints against public servants, minister and elected representatives at the state level. Lokpal at the central level and Lokayuktas at the state level. So tell me, what is compensatory afforestation?
कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन बताइए। सो कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन क्या होता है? इफ अ tract of forest land is cleared, so you have to plant a similar or even more regeneration activities in destroyed forest. Not destroyed forest, it's actually when, for example, this is a tract of forest, it has been destroyed, it has been cleared, so you have to do plantation in another site. Plantation honi chahiye at another site. That is known as compensatory afforestation. उसके लिए there is a fund, that is CAMPA, compensatory afforestation fund. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज करें चीजों को, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो तो याद रहना चाहिए। ठीक है, so compensatory afforestation fund 2016, new parcels of land are earmarked for development as a forest. उस जगह पे नहीं किया जाता, न्यू एरियाज पे प्लांट किया जाता, न्यू एरियाज। ठीक है, बस इतना याद रख लो। और project developers are asked to pay for net present value of the forest being cleared, so they are also asked to pay for the net present value of the forest being cleared. ठीक, so according to recent calculation, this is not important. So money कैसे disburse होती है, how the money is disbursed for compensatory afforestation? The money is parked in special funds. ठीक है, सेंटर एक स्टेट कैंपा फंड होता है और सेंट्रल कैंपा फंड होता है। पहले क्या होता था, मनी इज डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल फंड, पहले सारा पैसा सेंट्रल फंड में जाता है, फ्रॉम वेयर इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट्स। ठीक है, जहां पे प्रोजेक्ट्स लोकेटेड होते हैं, सो द मनी फ्लोज फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट फंड्स। जस्ट रिमेंबर दिस। State governments prepare an annual plan of operations approved by the CAMPA, Compensatory Afforestation Management and Planning Authority at the central level. ठीक है, सेंटर कितना फंड रख सकता है? 10%। ठीक है, 10% of the total money for administrative expenses will be kept by the center. Alright, और मैक्सिमम पैसा स्टेट फंड्स में रहेगा, close to 90%. Alright. Now, what is the UN High Seas Treaty? UN High Seas Treaty. Okay. So, UN members have agreed in the New York on the first ever High Seas Treaty. इसलिए है ये to protect world's ocean outside natural boundaries. तो ये इसका बस mandate याद करो। Mandate क्या है? What is the mandate? To protect. Are you guys following? I would want you to be interactive in the class, not just remain mute spectators. To protect the world's oceans outside the national boundaries. Okay, तो इसमें क्या टारगेट है? 30% ऑफ वर्ल्ड वाटर्स, ये हमने 30x30 कैंपेन अभी 10 बार मुझे लगता है पढ़ लिया होगा। 30% ऑफ वर्ल्ड ओशंस बाय 2030 प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, 2/3 of the world's oceans are currently considered as international waters of high seas. ठीक है, जो टोटल ओशन वाटर है उसका 1/3 कंट्रीज की टेरिटोरियल बाउंड्री में आता है, कंट्रीज के कंट्रोल में, और 2/3 इज इंटरनेशनल वाटर हाई सीज, जहां पे किसी कंट्री का भी कंट्रोल नहीं है। इट इज कॉमन वाटर, कॉमन रिसोर्स, ग्लोबल कॉमन। तो वहां पे इंश्योर करना है कि हम ये चीजें प्रोटेक्ट करें। ओके, समझ आ गया? Yes, sir. या कहीं पे डाउट हो तो साथ में पूछिए। वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव, द गुजरात गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वर्चुअल ट्रैफिक कोड्स। ठीक है, बस इतना याद रखिए, वन चालान, वन नेशन वन चालान इनिशिएटिव के अंडर गुजरात ने सेटअप किया है ये वर्चुअल ट्रैफिक कोड। एम क्या है? टू ब्रिंग ऑल एजेंसीज रिलेटेड टू ट्रैफिक वायलेशंस ऑन वन प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया मिशन हरियाली। इट इज अ वॉलंटियर लेड इनिशिएटिव, कहां पे? नालंदा, बिहार, टू ब्रिंग मोर ग्रीनरी इन द एरिया।
तो बस ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है ये याद रखना जरूरी है, बिहार में, ठीक है। ज्यादा इसकी डिटेल्स नहीं पूछे जाएंगे। अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक मिनिस्टर्स वी हैव, श्री नितिन गडकरी, उन्होंने बैम्बू क्रैश बैरियर का टेस्टिंग किया था अर्ली दिस ईयर। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर, इट वाज कॉल्ड एज बाहुबली, ठीक है, इंस्टॉल्ड इन वानी वरोरा हाईवे इन महाराष्ट्र, ठीक है। मटेरियल यूजेस बैम्बूसा बलोका, ठीक है, which has been treated with creosote oil, ठीक है, and coated with recycled high density polyethylene. Bamboo is no longer considered tree in India, ठीक है, ये याद रखना है, bamboo is not a tree. Bamboo is no longer considered a tree in India. All right. मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू इन इंडिया। तो ये याद रखें, ये जो बैम्बू क्रैश बैरियर है, इसका नाम रखा गया बाहुबली, ठीक है, और 200 मीटर लॉन्ग है, दुनिया का पहला है। कहाँ पे? वानी वरोरा हाईवे इन मध्य प्रदेश। और स्पीशीज का नाम क्या है? बैम्बूसा बैल्कोआ। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, the award is given for remarkable contributions by women leaders at grassroots level, ठीक है, who have contributed exceptionally to ODF plus, open defecation free villages, हर घर villages, हर घर जल, ठीक है ना, हर घर जल ये मिशन था, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन, जल जीवन मिशन, नेशनल वाटर मिशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आएगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, वुमेन लीडर्स को आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने इन फील्ड्स में कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट यू हैव Swami Fund. What is Swami Fund? Special window for affordable and middle income housing investment fund is a social impact fund specifically formed for completing stressed and stalled residential projects. ठीक है क्या ये? कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्वामी फंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मैनेज बाय SBI कैप वेंचर्स, एक SBI ग्रुप कंपनी है। क्या है? स्पेशल विंडो है, अफोर्डेबल मिडिल इनकम हाउसिंग, जो मिडिल इनकम बायर्स हैं उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाना है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, HUID, ये याद रखें, HUID नंबर किसके लिए है? कौन दे रहा है? BIS। BIS has prohibited the sale of hallmark gold jewelry or gold artifacts without a 6-digit alphanumeric HUID after 31st March. तो गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स आप 6-digit HUID नंबर के बिना नहीं बेच सकते। इट विल बी penalized, इट इज वायलेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। ISO स्टैंडर्ड्स ये हैं, ठीक है। हॉलमार्क ज्वेलरी लाइंग विद कंज्यूमर्स एज पर ओल्ड स्कीम्स शेल रिमेन वैलिड, जो पुरानी है आप नई नहीं बेच सकते। यू कैन नॉट सेल न्यू सच ज्वेलरी, ओके। हॉलमार्किंग स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 2000 में, by the BIS, Bureau of International Standards. ये इंडियन स्टैंडर्ड, सॉरी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन। एक और BIS है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इट इज बेस्ड इन बेजल, ये बेजल में है, ठीक है। नो लीगली गारंटेड प्रोक्योरमेंट एट एन MSP, ओनली J&K, ठीक है, सिर्फ J&K में MSP है एप्पल पे। अगर आपको पूछा जाए MSP फॉर एप्पल कहाँ पे है? सिर्फ J&K में। तो बाकी स्टेट्स में देयर इज नो लीगली गारंटेड MSP फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एप्पल क्रॉप। ऑलराइट, देन वी हैव इंटीग्रेटेड ऑन चिप माइक्रोफ्लूइडिक फ्यूल सेल नेटवर्क।
इट इज अ न्यू सर्वर आर्किटेक्चर, बस इसका नाम आपको याद रखना जरूरी रहेगा कि ये एक न्यू सर्वर आर्किटेक्चर है, इंटीग्रेटेड ऑन चिप माइक्रो फ्लूइडिक फ्यूल सेल नेटवर्क डेवलप्ड बाय द स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, that should be sufficient, you don't need to go in detail for that one. ठीक है, what are biocomputers? Scientists at the John Hopkins University have outlined potentially revolutionary new area of research called organoid intelligence. ठीक है, means computers with certain, artificial intelligence features which aim to create biocomputers where brain cultures grow in the lab and are coupled to the real world sensors. Okay, ये एक तरह के कंप्यूटिंग डिवाइसेस होंगे जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल डीएनए, प्रोटीन्स और सेल्स टू परफॉर्म कंप्यूटेशनल टास्क इंस्टेड ऑफ द चिप्स. So this is kind of a new innovation that is happening in computing field. It will use the properties of biological system to perform computation such as molecular recognition, self assembly and amplification. बस इतना याद रखो, इसमें organoid intelligence will be employed, और दूसरा they will use DNA, protein, cells to perform computational tasks. That is important here. Then there is this environmental treaty CITES, उसकी 50th एनिवर्सरी है. ठीक है, तो इसमें परमिट सिस्टम क्या होता है? All import, export and re-export of species is covered under CITES must be authorized through a permit system. इसकी COP हर 2 साल में एक होती है. COP means Conference of Parties. So Conference of Parties इसकी हर 2 साल में, every 2 years, COP of CITES is conducted. ठीक है, ये फ्लोरा और फौना की प्रोटेक्शन के लिए है. ठीक, नवंबर 2022 में इसकी COP 19 हुई थी, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस. कहाँ पे हुई थी? ये इंपॉर्टेंट, पनामा सिटी. So the last conference of COP, Conference of Parties of CITES convention, happened in Panama City. Panama City, and it was known as the World Wildlife Conference. Okay. No, lines were recently classified into 2 subspecies, Panthera leoleo and Panthera leomelanchaita. ठीक है, ये 2 स्पीशीज हैं. कहाँ मिलती हैं? दोनों का बस आप IUCN स्टेटस याद रखो. Panthera leoleo critically endangered and Panthera leomelanchaita is vulnerable category में. ये जो दूसरा वाला है, इट इज अ सदर्न लाइन, ये ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में मिलता है. और जो पैंथेरा लियो ये वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और इंडिया में. तो इंडिया में कौन सा लाइन मिलता है? पैंथेरा लियो. ठीक है, इंडिया में काफी लैंडस्लाइड्स हुई है इन नियर फ्यूचर, है ना. नियर फ्यूचर में काफी लैंडस्लाइड्स हुई हैं. तो लैंडस्लाइड एटलस क्या है आपका? All the 12 districts of Himachal Pradesh have figured on a list prepared by National Remote Sensing Center, NRSC. National Remote Sensing Center. It publishes the landslide atlas in collaboration with the ISRO. ठीक है, तो ISRO और NRSC, they collaborate on this, they work on this. It is one of the centers of ISRO, manages data from aerial and satellite sources to ensure mapping of potentially hazardous regions with greater क्या बोलते हैं उसको, vulnerability, with greater vulnerability to landslides. ठीक है, तो हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, दे आर मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स बिकॉज स्लोप्स आर स्टीप. आपके स्टीप स्लोप्स हैं, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उस वजह से ज्यादा ये इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, इंडिया इज अमंग टॉप 4 कंट्रीज विद हाईएस्ट लैंडस्लाइड रिस्क. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हिमालयस, ये जो हमारा हिमालयन बेल्ट है, नॉर्थ वेस्ट,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर 66.5% ऑफ द लैंडस्लाइड्स होते हैं इंडिया में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हिमालयस और उसके बाद वेस्टर्न घाट्स। यू हैव टू अरेंज इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपका फर्स्ट पे आएगा नॉर्थ वेस्ट हिमालयस, counting for 66%. Then we have northeast Himalayas and then we have the western Ghats. ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस याद कर लें। और 5 major districts that are impacted from the landslide issue, landslide problem are रुद्रप्रयाग and टेरी प्रयाग। वह कहाँ पे? उत्तराखंड में। थ्रिसुर and पलक्कड़ in केरला। और जम्मू कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट है राजौरी, that is also prone to landslides. ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. Shubhankar, how are you finding the class? I would like to hear from you. So, are you taking down notes? I would suggest you to take down a few notes as well, because it will help you. Be attentive in the class, all of you. And some of you had asked for the recordings. Recordings will only be provided in extreme circumstances, because I do not encourage you to not attend class properly with the thought that you will get the recordings. Recordings are there, but from now onward you should be careful कि आप class ध्यान से सुने और उसको properly note करें. Recordings will be provided later also. You should focus on attending class, ध्यान से सुनो और उसको रिवाइज करो और नोट्स जो दिए जा रहे हैं उनको भी पढ़ो, ठीक है? That should be the approach. Recordings are there, you will get it, but the focus has to be on revising what is being taught in the class. All right? So we'll break for 5 minutes and we'll reconvene in 5 minutes time. और mathematics वगैरह वो भी करो. Okay, let's Yes, let's do and we'll wind up थोड़ा सा पढ़ के, ठीक है? So electoral bonds. What are electoral bonds? ठीक है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था द स्कीम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर फंडिंग ऑफ द इलेक्शंस, फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. So it was launched in 2017 budget and notified by the government in 2018. ठीक है, कहां से परचेज हो सकते हैं? Selected SBI branches by an Indian person or corporation incorporated in India. ठीक है, political parties do not disclose electoral bond donors. तो इसमें donors के नाम भी disclose नहीं करने. So this is kind of I would say they have just legalized their anonymity and now they can get their money. No need to even declare the donors. 2000 rupees के bond आप जितने मर्जी ले लो. That is kind of a much more needs to be done on this front. ठीक है, इसमें best practice क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा recently disclosed identities of donors, the first political party to do so. ठीक है, तो required नहीं है, लेकिन अगर political party थोड़ी transparency लाना चाहते हैं तो they can disclose the name. Now, Supreme Court lowers the criteria for consumer courts. ठीक है, it has reduced mandatory professional experience for appointment. ठीक है, इसमें क्या है? प्रेसिडेंट का presently 20 years से अब 10 साल के एक्सपीरियंस से you can become the president of the consumer court. मेंबर के लिए भी 10 years कर दिया. Introduce written examinations, ठीक है, to check the candidates performance. Consumer Protection Rule 2020 govern the appointment of president and members of the state and district consumer redressal commissions. तो ये इतना पढ़ लीजिए कि कौन से rules है, कब आए थे, ठीक है? Then you have the Bhavishya platform. It is for pension payment and processing. It is an integrated online pension processing system that was made mandatory for all central government departments in 2017. तो भविष्य प्लेटफॉर्म इसके लिए, भविष्य का मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर पेंशन आपको फ्यूचर में मिलेगी. तो दिस इज रिलेटेड टू integrated online pension processing system for all central government departments 2017 से. Then you have global greenhouse gas monitoring infrastructure. क्या है ये? Let's see. तो UN World Meteorological Organization has come up with a new
global greenhouse gas monitoring infrastructure, ठीक है, that aims to provide better ways of measuring planet warming pollution and help inform policy choices, ठीक है. अब three major greenhouse gases कौन कौन सी आपकी? Any guesses? Anyone? Without reading? Any three major greenhouse gases? Carbon dioxide. I would want you to have be more interactive in the class. Carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. See, these are the important ones. Carbon dioxide accounts for 66% of the global warming. 66% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से ही होती है, ठीक है. कल से थोड़ा थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाइए आप लोग क्लास में ना. दिस इज नॉट desirable. The increase in CO2 levels from 2020 to 2021 was higher, okay, than the average growth rate over the past decade. ठीक है. अब WMO क्या है? World Meteorological Organization. WMO established in 1950. Headquarters क्या है इसका? Geneva. Specialized agency of the United Nations, responsible for promoting international cooperation on atmospheric science, climatology, hydrology, geophysics. जो भी climate से related different चीजें हैं, different issues हैं, they are dealt with by the WMO. 1950 में बना है, headquarters in Geneva. It is a UN body. Okay, that is what you need to remember. Louis acids. What are the Louis acids? Researchers in Germany, they have reported being able to make a unique class of catalysts, okay, called Lewis acids. They can break strong chemical bonds. Just remember, these are kind of catalysts that have been produced and help bring chemical bonds and speed up reaction. The catalysts, and basically these are catalysts to speed up chemical reactions. ठीक है. Composition क्या है, ज्यादा जरूरत नहीं है, but हाइड्रोजन आयन होगी that can accept a pair of non-bonding. Chemical composition छोड़, इतना चाहिए नहीं आपको. So they enable non-biodegradable fluorinated hydrocarbons, ठीक है, to be converted back into sustainable. तो इसका climate sustainability में बहुत important role है. Non-biodegradable hydrocarbons को sustainable chemicals में convert कर. बस इतना याद रखो, ठीक. Diseases spread by proximity to pigeon. हमने देखा होगा, in your balconies you may have seen pigeons. So they can cause diseases. Thane Municipal Corporation has warned people against feeding pigeons. Various type of lung disease हो सकती है आपको, respiratory problems हो सकती हैं. For example, pneumonia psittacosis, which is a bacterial infection, is caused by proximity to pigeons. ठीक है. Hypersensitive pneumonia, again a lung disease. Histoplasmosis and cryptococcal infection. So these are the diseases being caused by bacterial infections being caused by proximity to pigeons. Then you have International Big Cat Alliance. International Big Cat Alliance. India has proposed to launch a mega global alliance under its leadership to protect the big cats. Okay, big cats means tigers, lions, cheetahs, all these. Over 5 years with a guaranteed 100 million funding. ये क्या है IBCA? Aim इसका protection and conservation of 7 major big cats. कौन कौन सी है? This is the last topic for the day. अभी क्या क्या है इसमें? Tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar, cheetah. This you must be याद होना चाहिए आपको. Tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar, and cheetah. These are the 7 big cats. Okay? Governance structure इतना important नहीं है. 7 to 15 members होंगे, 5 years का term होगा.
This is not important. First 5 years supported by India's total grants of $100 million. तो ये ठीक है, आप लोग अब रिवाइज करके आए कल. I would want you to be more participative in the class and respond to the questions that are being asked. तो बीच में मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि आशियान के मेंबर्स कौन कौन से हैं. So if anyone can answer, I asked what are the members of the ASEAN. ASEAN countries कौन सी countries ASEAN category में आती हैं? Which countries are known as ASEAN? If anyone can tell me. After this, we'll conclude today's class. So it's Burma. Yeah. So Nice. it's Burma, Indonesia, Okay. Malaysia, Singapore, Right. Thailand, Vietnam, Good. Cambodia, sir. Yeah. All these countries. You got the right. This is the. I just wanted an idea. Brunei Darussalam. Someone has written. You can speak. Also, I would want you to speak rather than typing it. Brunei Darussalam, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam. That's correct. But try speaking next time. Anyways, that's all about today's class. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, we'll close the class and try to be more attentive, more responsive in the class, and revise what is being taught. You will get the PDFs for February and March very soon. After completion of March, we'll give you both the PDFs together. तब तक आप ये revise कर लीजिए January and be ready for the test on Monday for the first 3 months. Okay. Okay, sir. Any questions, anyone? Okay. If you have no doubts, we'll close the class. Thank you, everyone. We'll see you tomorrow. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Okay. Jai Hind, Jai Hind.